Hey everyone, welcome back. So इस वीडियो में हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करेंगे from the striver sheet, that is Kadane's algorithm. So if we come back to this question, this is like 53rd question on your LeetCode, that is maximum subarray. Okay, so let's try to understand what this question says. Okay, so basically you are given it with a nums array, something like that. Okay, now you have to find different subarrays for this nums array, and you have to give that subarray which has the maximum sum. Okay, and you just have to return the sum for that subarray. So for example, this one, what all subarrays can I have? First can be my only 5, then it can be 5 4, then it can be 5 4 minus 1, then 5 4 minus 1 7 8. Sorry, yeah, 5 4 minus 1 and 7. Okay, these are all starting with 5. Similarly, we can have from 4 minus 1 7 8. Okay, so what's the maximum subarray that we can have? So let's say this is 9 and this is 15. Okay, if I add all these things, 9 minus 1 8, 16 23. So this whole array will be the maximum subarray for us. But if we take this example, okay, so in this case, this part 4 minus 1 2 1, that is what, 4 plus 2 6, 7 7 minus 1 6. So the maximum subarray which we can get from this nums array is this one, which has a some value 6. So we just have to return this. Okay, so if we go with the brute force approach for this one, so it's pretty simple. हम क्या कर सकते हैं, विल गो विद फर्स्टली विल गो विद अ फॉर लूप. This will go from I to your n, and the second we can go from j to n minus 1, and this is how you can create what your sub arrays, right? Okay, once you have created all sub arrays, now what you have to do is you have to just find the sum, okay, from I to j, and just calculate the sum. Okay, so what will be the time complexity for this one? It will be O of n cube. Why? Because it's pretty simple. We are running 3 loops, right? Now, n cube is a very bad solution, to be honest. Okay, we can uh, we can make it better some way, because we can the two loops for creating the sub arrays, we can use it in a similar way. But here we can maintain a some array here only, and here we can implement, and at the end we can uh, check for the maximum or not. But still, this will reduce my time complexity to O of n square. So can we enhance the time complexity, or can we think of a better solution? So that is why we just want to enhance the time complexity from n square to n. So here's, we want the time complexity to be as O of n, and that is what we can use Kadane's algorithm. Okay, so let's understand what this Kadane's algorithm says. So it always helps in similar kind of questions where we just want to find the maximum product, maximum sum array, maximum sum of sub arrays in a single pass. Okay, so let's go one by one. Let's say our current sum is -2. Okay, now I have added minus to my sum. Okay, now if I move to the next element, it will be -1. So our goal is to maximize the sum, right? अगर हमारे सब array में माइनस सम है, so it contributes negatively to that fundamental logic, right? क्योंकि हमें सम maximize करना है, एंड अगर हमारे में नेगेटिव है, सो वी डोंट वांट दैट थिंग, राइट? क्योंकि वो आगे जाके भी आगो की वैल्यूज को रिड्यूस करेगा. सो दिस मीन्स व्हाट, एट दिस पॉइंट जितना भी हमारा प्रीवियस सम है, हमें उसको जीरो करके फिर से स्टार्ट करना है. ओके, मैंने यहाँ लिया जीरो, तो यहाँ सम कितना हो गया मेरा 1. अब मैंने 1 में -3 ऐड किया, तो कितना हुआ -2. अगेन ये नेगेटिव आया. इट इज लाइक जो हम लॉजिकली लगाना चाहते हैं कि मैक्सिमाइज सब एरे करें, उसका ये एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है ना. सो वी विल अगेन इनिशियलाइज 0. नाउ आई हैव एडेड 4 के बाद -1 किया 3. ऑल्दो देयर वाज अ माइनस, बट स्टिल हमारा वैल्यू अभी भी पॉजिटिव में है ना. ठीक है, नेक्स्ट गए हम 3, तो ये आया 5. नेक्स्ट हम गए 6. ओके, नाउ अगर हम जाएंगे तो 6 - 5 कितना हुआ, 1 हुआ. अभी भी इट इज नॉट नेगेटिव. ओके, तो अभी भी हम आगे चल सकते हैं. एंड 1 + 4 क्या आया, 5. So if we see, तो हमारा maximum sub array क्या आया, 6. Okay. Similarly, let's try for any other example. Let's say 8 - 3 - 9 6 4 -2. Okay. So इधर स्टार्टिंग में मैंने सम क्या माना, 8. 8 - 3 क्या 5. अभी भी पॉजिटिव है, so we can include this as long as हमारा जो प्रेजेंट सम है वो अगर नेगेटिव नहीं होता, we can add it. Okay. अब मैं इधर जाता हूँ, तो ये कितना होता है, 5 - 9 is -4. अब इसके बाद का जब मैं जितना भी सम ऐड करूंगा, ये एक एडवर्स इफेक्ट देगा ना.
सो व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पे मैं सम को वापस से क्या कर दिया, मैंने 0 कर दिया। ओके, यहाँ 6 ऐड किया, यहाँ 4 ऐड किया 10, यहाँ -2 ऐड किया 8। ठीक है, तो इसमें से मैक्सिमम क्या रहा हमारा 10। सो दिस इज व्हाट Kadane's algorithm does. Okay, so let's try to code this one. It is very simple. हमें सबसे पहले एक सम वैल्यू लेनी है, ओके, जिसको मैं बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, एंड एक रिजल्ट एरे भी स्टोर कर लेता हूँ। दैट इज व्हाट मैं इसको पहला ही एलिमेंट बोल देता हूँ, ठीक है, नम्स ऑफ 0। ओके, अब मैं क्या करूँगा, लूप करूँगा फॉर आई इन नम्स। ओके, मैंने सम में उस वैल्यू को डाला, नम्स ऑफ आई। अब मैं क्या चेक करूँगा, सबसे पहले व्हाट आई विल चेक इज कि क्या मेरा सम 0 या 0 से कम हो गया है। इफ सो मैं क्या करूँगा, सम को वापस से 0 इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, एंड एक बार मैं अब चेक भी कर लेता हूँ कि क्या प्रेजेंट सम रिजल्ट से ज़्यादा है, अगर है तो उसको अपडेट कर दो। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस, ठीक है, एंड एंड में हमने कर दिया व्हाट, रिटर्न। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस, एंड आप इधर से देख सकते हो कि 43 टाइम्स लिंक्डइन, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, गूगल, फेसबुक एंड ऑल। ओके, तो यहाँ पे इट शोज, ओके, हमें नम्स ऑफ आई नहीं, क्योंकि हम इटरेटर यूज कर रहे हैं ना, सो दिस विल वर्क। ओके, तो दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, लिंक्डइन, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल, ठीक है, 43 टाइम्स 35 17, इट्स वेरी फंडामेंटल लॉजिक विच यू शुड बी नोइंग। ओके, सो इस केस में क्या हुआ, लेट्स सी, हमने नम्स -1 दिया, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या था, -1। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई नीड टू डू इज, ये जो चेक कर रहे हैं ना हम, इसको हमें पहली चेक पे डाल देना है। ओके, एंड दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस टेस्ट केस। ओके, ओके, हम पहले रिजल्ट को अपडेट कर देते हैं, उसके बाद अगर नेगेटिव है देन वी विल इनिशियलाइज सम एज 0। ओके, सो आई होप दिस वाज वेरी सिंपल, कि बेसिकली हमको लूप करना है, सम में ऐड करते रहना है, जहाँ पे नेगेटिव आया 0 कर दो, मूव फॉरवर्ड। ओके, सो आई गेस यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। सो इससे हमारा 4th क्वेश्चन भी हो गया। सो दैट इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।